Alexa, how are you? On a scale of 1 to 10, I feel like I'm at 9.99 because there's always scope for improvement. Alexa, can you tell me a joke? What is Prabhu Deva's favorite snack? Nachos. So hello everyone, welcome to the Code Crunch Academy. In this video, we would be building our own virtual assistant in Python. My name is Shivansh Parekh. So I will guide you through this entire video how you can build your own virtual assistant in Python in just 10 steps. So let's begin. So step 1, to begin, make sure that you have Python installed on your system. If you don't have Python installed, don't worry. You can download it from the official Python website, that is www.python.org. So installation कर लेना वहां से, then we'll follow along. Additionally, you'll need a code editor or IDE, that is Visual Studio Code or PyCharm will definitely work for this development. So to make sure that you have Python installed correctly on your system, just type this command Python version. So this will be giving Python 3.11.4. This is the latest version that is installed over here. So we would be running a few commands, that is 1 plus 2, and just like that to make sure that Python is working fine on our system. So step 2, we have to install the required libraries. So we'll need additional few libraries to create our virtual assistant. So you just have to open a terminal or just a command prompt in the VS Code or PyCharm, whatever you are using, and you have to type all these commands. So while installing, I'll tell you what these libraries are used for. So just type this command code dot in a folder that you are creating the virtual assistant. So it will be opening VS Code over there. So let's just expand the terminal and we would be writing few commands that will install the required libraries. So first command is pip install pyttsx3. This command will install the module pyttsx3. I'll be telling you further that what this module is used for. So pip install speech recognition. So this will be installing the speech recognition module. Yeah. In the same way, we would be installing our PyAudio module. This PyAudio module helps us in the access of the microphone of this PC or the system, whatever you're using. So pip install Wikipedia. This is the Wikipedia API library. I'll tell you further what it is used for again. And this is pip install PyJokes. This will help our virtual assistant to learn some new jokes. So step 3, create a Python file. Open your VS Code and create a Python file, for example, virtual_assistant.py. So Python files के लिए our extension is py. Most of you might be knowing this. So let's just create a Python file. In the folder where we are creating our virtual assistant, over there we would be creating a virtual assistant _py file, and this is how the file is created. So step 4, installation तो हमने कर लिया है. Now we will be importing the libraries in our file so that we would be able to create our own virtual assistant. So all these files we would be importing. So just do it. So first we would be importing pyttsx3. This is a text to speech library. So whatever the text we would be speaking or the text we would be entering, that would be converted into speech. It would be used in the speak function that we would be creating. So next is that we would be importing speech_recognition as SR, so that बार-बार यार ये speech_recognition इतना बड़ा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. The next is that we would be importing Wikipedia. For example, if I search who is Salman Khan Wikipedia, yeah, who is Mahendra Singh Dhoni Wikipedia, so it would be telling me few lines about Salman Khan and Mahendra Singh Dhoni, whatever I search over there. So the next module we would be importing is at PyJokes. PyJokes, for example, if I tell my virtual assistant, tell me a joke, so it would be going through the PyJokes module and tell us some, ठीक-ठाक level के joke बताए गए. So step 5 is that the text to speech engine. We will be using the pyttsx3 library for text to speech conversion and code to initialize the engine. So बस एक छोटी सी line हमें लिखनी होगी that will initialize the engine that we would be using for the text to speech conversion.
So as you can read the comment, we will be writing a very clean code जिसके अंदर सारे comments होंगे. So initializing the engine and voice properties of text to speech module. So engine equal to pyttsx3.init. इस कमांड से यार हमारा pyttsx3 का जो हमारा इंजन है वो हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा. So the next step, that is the step 6. So define the speech recognition function. यार अब हम कुछ बोलेंगे तो वो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट उसको पहचानना भी तो चाहिए. So we will create a function that takes user speech as input and converts it into text. So let's just do it. I will be writing a comment over here that we are defining the speech recognition function. Comments बहुत जरूरी होते हैं यार कोड में लिखना. You know, जो कोड तुम्हारा होता है ना, कोड तुम्हारा अपने आप बोलना चाहिए, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. That is the best code that you can write. So in Python, you define function as def listen. This function would be listening to what we would be saying. So r equal to sr.recognizer. This method will recognize what we are speaking. So next, we would be writing with sr.microphone as source. Since this sr.microphone, we are using the laptop microphone as the source to record our own audio. So if this command doesn't work or if it shows any error, just make sure that you have the Pi audio module installed in a correct manner. So we have to print listening to you. यार ये हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ऐसा डॉट रिकॉग्नाइजर हमसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा. So print listening to you would be printed on the terminal and it will make sure कि हाँ हमारा virtual assistant अब हमें सुन रहा है. So audio equal to r dot listen source. चलो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं यहाँ पे. तो r dot listen source. So source is the microphone that we are using जो Pi audio से हमारे पास आया है and r is the recognizer. So r dot listen source would be the method that we would be using for capturing the audio from the microphone. So यहाँ पे अपन try and accept statements लगाते हैं. तो we would be trying, sorry, तो यहाँ पे try and accept statements लगाएंगे तो यहाँ पे print recognizing आएगा कि हाँ virtual assistant अभी हमारी voice recognize कर पा रहे हैं. देखो यहाँ पे हम एक query लिखेंगे तो query would be r.recognize_Google. तो ये जो है हमारा एक मेथड है जो कि एक ऑडियो कमांड जो हमारा यहाँ पे हमने लिसन करा है वो लेगा एंड उसके साथ हमने यहाँ पे लैंग्वेज पास किया है इंडियन इंग्लिश, तो उससे हमारे पास यहाँ पे आएगा. सो चलो अब पाइथन का एफ स्ट्रिंग आपको बताता हूँ. एफ स्ट्रिंग में क्या करते हैं, एफ स्ट्रिंग के अंदर हम एक वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर. सो यहीं पे हम प्रिंट करवाएंगे कि अभी यूजर ने क्या बोला. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि यूजर सेड this query. Query would be the recognized text. The recognized text that would be used to get the command. So यहाँ से हमारे पास सीधा सीधा एक query return हो जाने वाली है. चलो ठीक है, अगर हमारा listen function भाई वर्क नहीं कर पाया, उसको समझ नहीं आया कि भाई हमने क्या बोल दिया या फिर हमारे बैकग्राउंड में से कोई नॉइज आ रहा हो, तो फिर हम उस केस में क्या यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रिंट यार समझ नहीं आया तूने क्या बोला, प्लीज रिपीट करो. ठीक है, सो ऐसे कुछ लिख देते हैं हम यहाँ पे, प्लीज रिपीट. सो दिस वुड बी प्रिंटेड ऑन द टर्मिनल एट हमारा वर्चुअल असिस्टेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हमने क्या बोला एंड सो ही इज आस्किंग यू टू रिपीट इट. सो दिस विल बी रिटर्निंग द एम्प्टी स्ट्रिंग as no query is captured over here. So this was how you can define your own speech recognition function. So एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, r इक्वल टू एसआर डॉट रिकॉग्नाइजर. एसआर डॉट माइक्रोफोन को हमने एक सोर्स की तरह यूज किया जो कि पाई ऑडियो के अंदर आया. फिर हमने लिखा यहाँ पे कि यार हाँ टर्मिनल पे कि हाँ हमारा वर्चुअल असिस्टेंट अब हमें सुन रहा है. एंड ऑडियो इज r डॉट लिसन सोर्स. सोर्स इज द माइक्रोफोन एंड वी वुड बी यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स. सो प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा वर्चुअल असिस्टेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है, अभी टर्मिनल पे प्रिंट होगा. एंड क्वेरी, दिस क्वेरी विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम द ऑडियो जो यहाँ पे हमारा माइक्रोफोन कैप्चर करेगा. ये फंक्शन अपने आप उसको कन्वर्ट कर देगा. फिर हम एक एफ स्ट्रिंग से हम प्रिंट करवाएंगे कि हमारे यूजर ने क्या बोला एंड हम क्वेरी को रिटर्न कर देंगे. अगर ऐसा नहीं हो पाया तो एक एक्सेप्शन हम रेज करेंगे एज ई. ये सिंटेक्स होता है पाइथन में एक्सेप्शन रेज करने का. एंड इट विल बी प्रिंट यार प्लीज रिपीट कर दो, मुझे समझ नहीं आया, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड. सो स्टेप 7,
we would be defining the text to speech function. So अब text to speech function हमारे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा that will convert the text into speech using the PyTTSX3 library. So again, we are writing the comment that we are defining the text to speech function and function का नाम हम यहाँ पे speak रख देते हैं because वो बोलेगा वहां पे text को speech में convert करेगा. So it will say the text that would be passed over here. So it would be engine dot say text जो कि हमारा input है and engine dot run and wait. Run and wait से क्या होता है कि अब ये कुछ बोलेगा and it will wait for some time. सो स्टेप 8 अब आया भाई मेन फंक्शनैलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे इसकी. सो नाउ लेट्स डिफाइन द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ आवर वर्चुअल असिस्टेंट. हियर इन एग्जांपल हम देखते हैं कि भाई हम कैसे एक बेसिक टास्क परफॉर्म करने वाला वर्चुअल असिस्टेंट इधर बना सकते हैं. सो नाउ वी वुड बी डिफाइनिंग द मेन फंक्शनैलिटी द वर्चुअल असिस्टेंट. या सो एक फंक्शन बना देते हैं हम डेफ वर्चुअल अंडरस्कोर असिस्टेंट एंड ये हमारे पास हम इसको चलाएंगे वाइल ट्रू. एक हम स्टेटमेंट डालेंगे बाद में अगर हमारे यूजर ने बोला एग्जिट तभी एग्जिट होगा. सो ठीक है. सो क्वेरी इक्वल टू लिसन डॉट लोअर. इस स्टेटमेंट को यहाँ पे समझते हैं कि यार एक क्वेरी है, एक लिसन मेथड है हमारे पास, वो कॉल हुआ, उसने हमारे को क्या एक स्ट्रिंग रिटर्न किया. जो स्ट्रिंग रिटर्न किया उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, लोअर केस में. चलो ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं. जो लिसन मेथड था वो हमें एक स्ट्रिंग रिपीट कर रहा था. ठीक है. जो यूजर ने ऑडियो बोला उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था, अब उसको ही हम यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं टू हेयर क्वेरी एंड कन्वर्ट इट इन लोअर केस ताकि हम प्रोसेसिंग अच्छे से कर पाए. ठीक है. तो अब चलो एक बेसिक सी फंक्शनैलिटी बनाते हैं जो हमने विकिपीडिया की एपीआई लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट करी थी ना. सो इफ आई वुड बी सर्चिंग हु इज महेंद्र सिंह धोनी, सर्च ऑन विकिपीडिया. सो इट विल बी सर्चिंग विकिपीडिया for your question and tell you some sentences about Mahendra Singh Dhoni or anything like that. Tell me about CBSE or tell me about what is Python. So, एक statement लिख दिया हमने if Wikipedia or wiki inquiry. So, the engine would be speaking, searching Wikipedia for a question. जैसे हम अपने virtual assistant को बोलते हैं ना, please wait, I'm searching. तो इस तरीके से ही यहाँ पे search करेगा and query equal to query dot replace Wikipedia by empty string. सो विकिपीडिया को यूजर की क्वेरी से हटाना पड़ेगा अपने को ताकि हम उस क्वेरी को डालें यहाँ पे. ये एक फंक्शन है हमारे पास रिजल्ट्स इक्वल टू विकिपीडिया डॉट समरी जहां पे हम एक क्वेरी पास कर रहे हैं और नंबर ऑफ सेंटेंसेस जितने हमें सेंटेंसेस उस रिजल्ट्स के अंदर चाहिए. सो अब स्पीक करेगा जैसे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया महेंद्र सिंह धोनी वाज द एक्स इंडियन कैप्टन या फिर वो जो भी सेंटेंसेस हमारे पास उस तरीके से देगा तो वो हमारे पास रिटर्न होके आएगा. एक रिजल्ट्स में स्टोर होगा वो सेंटेंसेस हमारे पास यहाँ पे दो रहेंगे. ठीक है. सो एक विकिपीडिया अगर हमारे पास क्वेरी में आया तो इस तरह से हमने सारी फंक्शनैलिटीज यहाँ पे डिफाइन करी. ठीक है. एंड इफ जोक इन क्वेरी, सो माय वर्चुअल असिस्टेंट टेल मी अ जोक. सो इफ द जोक इज इन द क्वेरी then the module pyjokes will generate a random joke and it will speak a joke. Else quit inquiry or exit inquiry. So if quit inquiry or exit inquiry मतलब हमने बोला कि quit exit तो हमारा virtual assistant वहीं पे बंद हो जाएगा and it will greet us goodbye just like that. यार एक चीज रहेगी, हम एक बार एक हाई वाले भी बोल देते हैं, हाई या हेलो अगर हमें virtual assistant ने बोला तो हम क्या करेंगे. ठीक है. एक else वाले स्टेटमेंट में हम यहाँ पे डाल रहे हैं if the virtual assistant is not able to understand you, so it will speak I am sorry as I cannot assist you with that. Okay. चलो ठीक है. अभी हम एक हाई वाला भी डाल देते हैं यहाँ पे if hi inquiry, so our virtual assistant would be replying speak hi dear. So this was the main virtual assistant functionality. इस functionality को आप extend भी कर सकते हो query के अंदर अलग अलग चीजें डाल के. For example, if you want to hear a joke or you want to talk about anything, तो उसके लिए आपको एक string डालना पड़ेगा कि for example I am asking what are the top colleges in India. So you can just search Wikipedia for that or use any module for that and return the results. So it's just a basic implementation. You can always extend it.
So step 9, it is the most easiest step. एक main method लिखेंगे and we would be executing our virtual assistant. So execute the virtual assistant, add the main method code at the end of your file to execute the virtual assistant. So here we are writing the main method at the end of the file. So main method का syntax ऐसे ही रहता है, if underscore underscore name underscore underscore equal to main. Sorry, ये हमारी एक बार इसको equal to कर देते हैं. Yeah. So equal to main. Then, so here in the main method, it would be asking, hello, I am your assistant. How can I help you? So after that, you would be speaking something, and we would be calling our virtual assistant method. So that's all about the coding part. Now we will see how our virtual assistant works. So step 10, the last step, जिसके लिए इतने टाइम से तुम लोगों ने इंतजार किया, वो घड़ी आ ही गई. So save your Python file and run it from the terminal or IDE. You can interact with your virtual assistant by speaking commands or questions. It will respond using text to speech conversion. So yeah, let's run the file now. Finally, the last step. So yeah, we are ready with the last step and we can run our virtual assistant now. So here are the import statement. Here we have initialized the engine. We are taking a final look at the code we have written so far. Here is the listen function. I have extended some exception handling over here. So this is the unknown value error and this is the request error. And I have just modified the print statements over here so that if there was any error while recognizing, or is it the unknown value error that your virtual assistant was not able to understand. So this is the final code. It looks like that. Now we will be running the file. Just open your terminal. Hello, I am your virtual assistant. How can I assist you? Listening. Hello. Hi dear. How can I help you? Listening. Tell me a joke. So the joke is, why do Java programmers have to wear glasses? Because they don't see sharp. Okay. Listening. Tell me another joke. So the joke is, there are two types of people, those who can extrapolate from incomplete data sets. Listening. Exit. Goodbye. Nice to talk to you. So yeah, this was all about the virtual assistant that we built. You can see यहाँ पे listening आ रहा था and over here it was recognizing, and this was the S string, and again this loop was continuing till I said exit. So this was all about the virtual assistant that we built. Thank you for watching, and I will be attaching the source code in the description. So that's it. You have created a basic virtual assistant using Python. Feel free to enhance it with additional features and functionalities to suit your needs. Obviously यार, एक बार तुमने virtual assistant बना लिया, उसके बाद तुम इसे any time extend कर सकते हो. So this was all about how you can create your virtual assistant in 10 steps using Python.